Hello everyone, good evening and welcome to BYJU'S exam prep. I hope everyone can hear and see me very clearly. Good evening, just confirm if I'm clearly audible and visible to everyone. I took a bit of time to go live, but I hope everything is fine now. So we have yet another rapid fire happening today. We've had a lot of rapid fires over the course of last 1 month. We've had rapid fires on main theme. We've had one on tone of the author. We've had one on inference-based questions. Today we're going to have one on figures of speech. Okay, so see, figures of speech is very likely to come in the examination और बहुत सारे questions हमको mocks में भी दिखते हैं. तो इसलिए हम यस ऑडिबल है, ठीक है. सो इसलिए हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट मेरे पास बहुत लंबे पैराग्राफ्स नहीं है फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए, सो दैट आपके लिए ढूंढना इजी हो. क्योंकि आइडिया है कि बहुत सारे लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को अटरली इग्नोर करते हैं, और ये अगेन इन माय ओन वर्ड्स दिस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट. आप बहुत इजीली यहाँ स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली इसको कवर अप कर सकते हो. 2 घंटा भी अगर दे दोगे ना फिगर्स ऑफ स्पीच को, तो यस प्रांजलि, इट्स गोइंग टू हैपन टुमारो. कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, इट्स गोइंग टू हैपन टुमारो एट 4. ओके, सो लॉजिकल कंसिस्टेंसी जिसने मिस कर दिया, अभी भी नहीं किया है लॉजिकल कंसिस्टेंसी और एरर्स कर रहे हो, कल लॉजिकल कंसिस्टेंसी का सेशन करूंगी मैं 4. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. व्हाट आर वी गोइंग टू बी डूइंग? वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस on figures of speech. I'll give you one line, I'll give you one paragraph, I'll give you a short poem. आपको फिगर आउट करना है कि वहां फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज्ड है. अभी पहले मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कितने लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच याद नहीं है. You don't remember what were the common figures of speech that can come in the examination? Hi, good evening. How many of you do not remember the common figures of speech? और ये भी याद नहीं है फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? अलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटोनिमी, देयर आर मेनी. Do you remember all of that? चलो ग्रेट. अभी भी अगर आप ये सेशन देख रहे हो रिकॉर्डेड या लाइव और अभी भी आपको प्रॉब्लम है, आई हैव टेकन 2 सेशंस ऑन यूट्यूब चैनल जहां मैंने कुछ कॉमन कवर अप किए हैं. आई हैव टेकन 1 सेशन इन मोस्ट ऑफ द बैचेस. कुछ बैचेस में ये होने वाले हैं जहां मैंने बहुत डिटेल में किए हैं. सो इफ यू स्टिल हैवंट done figures of speech, please do them because the examination में very likely आ सकता है CLAT और ALET दोनों में. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास के साथ. Read the short poem and tell me which is the figure of speech used in this extract. Let's see if you can get that correct. Very good, Shubhra. That's going to help you. Correct, Sagrika. Now read this, everyone, and let me know the figure of speech used here. Okay. B, simile. Simile, everyone, simile? Correct. The correct answer is a B, simile. Now, simile का एक quintessential characteristic होता है, हम यूज करते हैं like, या फिर so, या फिर as. हम इनमें से या इसी से ही का ही कोई सिनोनिम, हम ऐसा ही एक डायरेक्ट वर्ड यूज करते हैं कंपैरिजन दिखाने के लिए. सो लव को रेड रोज से कंपेयर किया है, दैट्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन हियर, है ना. और ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन हमने एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया है लाइक, सो और एज के साथ में. So when we have these words directly written, ये simile हो जाता है, और जब ये like, so और as नहीं यूज होता, वो क्या बन जाता है? It becomes a metaphor. All right. So the correct answer here is a simile B. Let's have a look at question number 2. Do you remember what was metonymy? The root word being NYM here. Can anyone tell me what was metonymy? Yes, that was a metaphor when we use indirect comparison. Do you remember what was metonymy? Okay, so I think थोड़ा सा लैग है. बाय द टाइम आप मुझे आंसर भेज रहे हो और मेरे पास आ रहा है. मेटोनिमी में रूट वर्ड है निम. निम का मतलब होता है नेम. एग्जैक्टली. सो हम एक नया नाम लेते हैं, एक रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. एग्जैक्टली प्रांजलि, जैसे हम क्राउन यूज करते हैं किंग के लिए, और क्राउन क्लोजली एसोसिएटेड भी है किंग के साथ, है ना. सो दैट्स वो सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है. यस एग्जैक्टली.
center for the government, wheels for car. Yes, these are closely associated words. तो हम एक new name use करते हैं एक closely associated word के साथ ताकि वो एक पूरे group को represent करें, right? Bread for meal, bread for food. Okay, so that's metonymy. Let's have a look at question number 2, everyone. Read this paragraph and tell me the figure of speech used here. Correct. There are plenty, Gauri. Very good. Correct, Shubhra. Question number 2, everyone. No, that will be metonymy. If you have to choose, I will choose that to be metonymy because ये closely associated word है. ठीक है? Answer, Pranjali says C. Okay, बाकी बच्चे? C. Correct. The answer is personification. यहाँ आप revenge को एक personification figure of speech के साथ use कर रहे हो. यहाँ एक ऐसा behavior आ रहा है as if a human is going to act. An untamed form of retribution seeks its own equilibrium, unbound by the. So it's unbound. It is seeking something. You know, अगर मैं यहाँ he or she use करती तो और ज्यादा appropriate हो जाता. Nonetheless, आप इसको human characteristic दे रहे हो. Trying to find something. It is unbound by other things. It is more of a personification, giving human characteristics to non-human things. Yes, it is seeking equilibrium. All of that is personification. The correct answer is C here. Very good. Understatement होता है जब आप कोई एक बड़ी चीज है बट आप उसको बहुत ही मेलो डाउन करके दिखा रहे हो. ठीक है? Metaphor again is a comparison but an indirect comparison जहां आप like so and as नहीं use करते हो. Irony is what has happened is opposite, exactly opposite to what was expected. You expected something but that did not happen, the opposite happened. That's irony. अब irony में भी बहुत सारे forms होते हैं. Literal irony है, verbal irony है, but इतने detail में जाना, if you have time you can go but you can skip that as well. ठीक है? आगे चलते हैं question number 3 पे everyone. Here you go. Opposite, yes. बहुत सारे opposite figure of speech होते हैं. Irony is one of those. चलो अब difficulty level थोड़ा सा increase करते हैं, देखते हैं किसको आंसर आता है. Absolutely, Shubhra. Understatement is the opposite of hyperbole. Okay, Pranjali says apostrophe. Do you remember apostrophe? Shubhra, you also do? I thought apostrophe is this. Like Alpa's class. तो ये हुआ apostrophe मेरे हिसाब से तो. Yeah? No, nahin. Apostrophe as a figure of speech is not using that. Okay? Apostrophe as a figure of speech is when you are talking to somebody or something as if the person is right in front of you. But in reality, the thing or the person is not in front of you. It is solitude. ऐसा लग रहा है आप solitude से सामने ही बात कर रहे हो. Solitude बिल्कुल आपके सामने है. But ऐसा है नहीं, है ना? Oh, solitude, where are the charms? Okay, so that is apostrophe. Oh, solitude. I will repeat. Apostrophe is a way of talking as if the person or the thing is right in front of you. But in reality, that's not the case. The thing or the person is not in front of you. Here, the speaker is talking to solitude. Like, oh, solitude. All right, the correct answer is an apostrophe. Euphemism क्या होता है? Euphemism होता है जब आपको कोई hurtful चीज बोलनी है बट आप उसको बहुत mellow down करके बहुत politely बोल रहे हो so that it doesn't come across as hurtful. Like when you have to fire somebody, when you have to inform someone of someone's death. ये hurtful चीज हो सकती है ना, तो आप उसको बहुत mellow down करके बताते हो एक simpler set of words कि वो किसी को shocker ना लगे, किसी को बहुत outright ना लगे. ठीक है? Exactly, Shubhra. Correct.
Apostrophe is a form of personification. Yes, आप बोल सकते हो. Correct. So someone died, he passed away is a better form of saying that. That's euphemism. यहाँ root word हुआ EU. EU means good. So you're not saying something good, but you're saying it in a good manner, in a polite manner. Okay. All right. आगे चले. Hyperbole is exaggeration. Question number 4, everyone. Here you go. So easy. Easy. This one is very easy. Yes, that is euphemism. That is exactly जब आप बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल नहीं साउंड करना आपको, आप एक रूड चीज बोल रहे हैं, एक अनहैप्पी चीज बोल रहे हैं, बट उसको आप एक पोलाइट वे में बोल रहे हैं. ठीक है. बट ये अंडरस्टेटमेंट भी तो हो सकता है. बताइए मुझे. It could be understatement as well. How will you choose if it is euphemism or understatement? दोनों ही सिमिलर है. आप कैसे चूज करेंगे? बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर अगर आपको चूज करना है यूफेमिज्म में और अंडरस्टेटमेंट में, आई वुड चूज understatement. I have to have this operation. It isn't very serious. I have this tiny tumor on the brain. I don't know from the context of the statement if I am, God forbid, expressing this to a loved one. I'm expressing this to somebody who will be deeply impacted with the tumor that I have. And even if I'm saying this, I'm not saying it very politely. I'm telling somebody that I love that I have to do an operation, I have a tumor, but it's not very serious. इसमें polite क्या है? आप सिर्फ उसको प्ले डाउन करने की कोशिश कर रहे हो. अंडरस्टेटमेंट है. ट्यूमर है तो वो ये स्टेटमेंट एक्चुअली अंडरस्टेटमेंट है. It cannot be something that's not very serious. Brain में tumor है, it has to be serious. So he's actually playing it down. It's an understatement. Understood, everyone? So the correct answer would be D. Instead of euphemism, we would choose understatement here. I hope everyone got some clarity about that. Okay? D. Yes. Toning it down. Next question, everyone. Question number 5. Here you go. Achha, before that, if you haven't enrolled yourself for our classes, we have a 3-day free trial going on. So you could just register yourself with your phone number and then access everything that a student of our batch can access for free. All the mocks, all the tests, all the classroom programs for free. Just do that right away. Okay? All right. That's correct, Nandana. All right. So here we go with question number 5. Such a good line. What is it? See, hyperbole? Oh, yes, that is. I mean, oh, torn thousand brothers could not with all then quantity of love make up the sum. ये typical exaggeration है, typical Bollywoody poetic line where a lover is trying to woo the partner and say, "Bhai, I love you itna ज़्यादा that it can't even be equated to tearing 1,000 brothers." This certainly is exaggeration. This is hyperbole. Overstatement. Understatement का opposite हो गया वो, है ना? एक तो mellow down होता और यहाँ exaggeration हो गया. So cheesy, absolutely. No, not even cheesy. It's actually scary. You know, who would like to hear something of that sort? Not today, for sure. This is going to be hyperbole. C is our correct answer. Let's move to question number 6, everyone. All righty. Oh, yes, correct, Pranjali. Question number 6. Here you go.
Okay, A. Others? Gauri says A. D. Anticlimax. D. You're changing it to D? Okay. Anticlimax. Let me explain both of it. That will give you some clarity. ठीक है? Antithesis, oxymoron, anticlimax सब में opposites होते हैं. किसी में opposite ideas, किसी में opposite words, but होता use opposition का है. अब देखो कैसे use होते हैं. ठीक है? Oxymoron में two opposite words होते हैं और ये opposite words एक दूसरे के लिए use होते हैं. Usually they are placed adjacent to each other. Okay? So a truthful lie. So ये दोनों opposite words हैं, साथ ही used हैं, एक दूसरे के लिए used है, usually adjacent to each other placed होते हैं. Antithesis में भी two opposite words होते हैं, लेकिन ये दोनों opposite words sentence में अलग अलग जगह use होते हैं, ये अलग अलग चीजों के लिए भी use हो सकते हैं. ठीक है? Anticlimax में आप reduce करते हैं importance. आप बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं एक ही चीज को डिफाइन करने के लिए, लेकिन हर वर्ड के साथ आप उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे रिड्यूस करते जाते हैं. द करेक्ट आंसर हियर कैन नॉट बी एंटी क्लाइमैक्स. आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाई. क्योंकि आप बहुत सारे वर्ड्स एक ही चीज की, एंटी क्लाइमैक्स में बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूजुअली यूज होते हैं, और भी चीजें हो सकती है, बट एक ही वर्ड को डिफाइन करने के लिए होता है, तो यूजुअली वो एडजेक्टिव्स हो जाते हैं, एंड ग्रेजुअली यू विल रिड्यूस देयर. ठीक है? बट जरूरी नहीं है एंटीथेसिस हो यहां. ठीक है? रीजन ऑफ एंटीथेसिस हियर इज सेट ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स. पहला है पेन और दूसरा है प्लेजर. पेन हुआ द बेयर के लिए, प्लेजर हुआ स्पेक्टेटर्स के लिए. दो ऑपोजिट वर्ड्स तो अलग अलग चीजों के लिए यूज होना is antithesis. I'll repeat that in English. In antithesis, you'll have two opposite words, but they will not be used for each other. They will not be used for the same word. They will be used for different words. But there will be opposing ideas. There could be direct words. There could be opposing ideas, but bilkul contrasting honge. Here you have pain and pleasure for different things. Thus, the correct answer is yes, correct. That's antithesis. ठीक है? चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 में. करेक्ट प्रांजलि, दैट इज एंटी क्लाइमैक्स. ठीक है? क्लाइमैक्स तो है, स्टोरी को एंड दे रहे हो, बट बहुत ही डिमीन करके दे रहे हो. दैट्स एंटी क्लाइमैक्स. क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन. Let's see if you get this. This is tricky. Swapnil, yeah. I have 3 answers, A, B, D. देखो थोड़ा सा tricky है because यहाँ ना I haven't used a very common set of figures of speech. The correct answer is metonymy. 2 people got that correct. Mangal and Subhashini. It's not interrogation. Let me make it clear. पहला question mark आते interrogation हम mark नहीं करते. Figure of speech, interrogation is not plain questioning. I'll explain that later on. पहले antithesis मैं आपको समझा चुकी हूँ. ठीक है? You'll have multiple words and gradually you'll reduce the importance. You'll demeaning sense में use होगा. ठीक है? Metonymy is one word used to define something else which is closely associated. Cradle यहाँ birth को represent कर रहा है, grave यहाँ death को. Is it metonymy, everyone? You are using one word to represent something else which is closely associated with it. Cradle for birth, grave for death. I'll explain why is that not interrogation. Absolutely, Subhashini, बिल्कुल correct. ठीक है? अब interrogation क्यों नहीं है? Interrogation figure of speech. देखो एक तो होता है interrogative sentence जहां आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. What is your name? What is your answer? These are interrogative statements. But यहाँ आपसे statement नहीं पूछा, यहाँ आपसे figure of speech पूछा है. An interrogative figure of speech is where you are asking a question, not looking for an answer. ऐसे question नहीं होता जब मामा पूछती, What do you think? Am I your servant? Am I mad? Am I crazy? I don't expect an answer from you. ये सिर्फ emphasis देने के लिए questions होते हैं.
वो होते हैं interrogation and figure of speech, asking questions only to emphasize, not seeking an answer to it. Okay, so I hope you understand what is interrogation as a figure of speech. Good that this is taking you through a quick revision of figures of speech. Let's have a look at question number 8, everyone. अच्छा, यहाँ पे उसी लाइन में कंटिन्यूड है यहाँ, ठीक है. It's a rhetorical question. Absolutely correct, Subhashini. क्वेश्चन टैग्स में बच्चे नेगेटिव होता है, रिटोरिकल में नेसेसरी नहीं है नेगेटिव हो, वो अननेसेसरी क्वेश्चन होता है. नाउ दिस माय चाइल्ड इज एन इंटेरोगेशन. यू सी दैट? आई मीन, जो ऊपर वाले ने ईयर बनाया उसको क्या सुनाई नहीं देगा क्या? उसको तो सुनाई देगा ही ना. उसने जो आईज बनाए उसको नहीं दिखाई देगा? उसको तो दिखाई देगा ही ना. वो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आंसर के लिए दिखाई देगा? आप बोलेंगे हाँ सर दिखाई देगा. ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू. It's a question. It sounds like a pravachan, you know? Oh my God. So here the question is being asked only for the sake of asking a question to emphasize the fact that he planted the ear. Shall he not hear? Of course he would. Okay. Is India not democracy? It depends, Gauri. Some foreigner might actually ask, and that may not be an interrogation. Okay. All right. So previous वाले का आंसर क्या क्वेश्चन था? मुझे देखने दो. हाँ, इधर मेटोनिमी था because cradle और grave अब डेथ और बर्थ के लिए यूज्ड है. So that's metonymy. ठीक है? Here we have interrogation. Question number 9, everyone. Here it is. बिल्कुल हो सकता है और इसलिए ऑप्शन में नहीं है प्रांजलि. Okay. Just a minute. Personification. Personification. Land is nurtured. अच्छा एक बात बताओ, ये फर्स्ट लाइन इंटरोगेशन नहीं है? देखो, onomatopoeia is words that represent the sound they are associated with. It's certainly not onomatopoeia. Okay. First line, is it not interrogation? सोच के बताओ. Who is here so vile that will not love his country? Everyone loves their own country. You must be a vile. है ना? तो ये इंटेरोगेशन भी हो सकता है. पर्सोनिफिकेशन लैंड भी के साथ भी हो सकता है because it nurtures, it's grace. लेकिन अगर आपको चूज करना है तो आप यहां चूज करोगे. I'll tell you why not personification. For a strongly personified statement, we need to use more of he, him pronouns, personal pronouns, to show that we are personifying. You remember the cat in the rain story, 2020 CLAT? Constantly we used he for cat. We knew it was personified. ऐसे he, him pronouns, personal pronouns use करना थोड़ा इंक्लिनेशन उनका ज्यादा होता है टुवर्ड्स पर्सोनिफिकेशन. तो अगर आपको यहाँ इंटेरोगेशन और पर्सोनिफिकेशन में चूज करना है, आप इंटेरोगेशन यूज करोगे बिकॉज वो क्लियर है कि यहाँ आंसर नहीं सीख कर रहे हो आप. बट सिंस यू आर not using a personal pronoun, the chances of this being true is lesser. So a point given to D here. All right, everyone? ठीक है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. And the last question for the class. Oh, guys, before I tell you the answer to this question, please hit the like button. I don't like this when you don't do this. Hit the like button right away. I have 25 people live. I need at least 25 likes. Pranjali, that's for you. Correct.
It is anaphora. This is not pun. मजाक नहीं है ये, बिल्कुल मजाक नहीं है. जब repetition of one word or one phrase होता है उसे हम anaphora कहते हैं. This is a classic example of anaphora, the most popular one. Exactly. When words are repeated, phrases are repeated, like I is repeated here, that's anaphora. All right? So, dude, why aren't you liking the video? If you are gaining something out of it, you need to do that. Go ahead, do it. It wouldn't cost you a thing. But that's certainly going to help me a lot. So the answer here was anaphora. Thank you for a quick revision on figures of speech. Our third All India Open mock goes live from 20th October to 29th of October. Make sure you sit for this mock. It's for free. Everyone should sit for it, enrolled, not enrolled, because this will give you a chance to see where do you stand among thousands of people. Also, we have a free workshop happening for 2025 aspirants. 5 steps to ace CLAT 2025. Make sure you attend this on 21st of October, 6 p.m. Nivedita ma'am is going to be in an interactive session with you to answer all your questions. Our test series for 2024 aspirants is live. You get loads of tests and comes for a very nominal cost. Rush up, enroll yourself right away. Our program for 2024 and 25 aspirants is also live. If you need to know more about the program, you can call our counselors on this specific number. Follow us on all our social media handles, everyone. And make sure you subscribe to our channel. Thank you so much, everyone. Have a very good evening. God bless you. See you in the class at 7.